So, guys, this was very interesting for me today. Before 1 month, I think, when I was in Bangalore, that time one of my students he called me and he asked, "Sir, can Mac number be negative?" And we had a very good and very healthy discussion on phone call around 1 hour. And I asked him that whatever thought process you are getting out of box, other than gate exam and all, they all are welcomed, because I really take interest when students are asking these kind of doubts, because it makes me to enjoy these doubts. And thankfully I am in the stage of replying with proper logics about all these doubts. And you see what happened today itself. One of my student called me and he said, "Sir, I am getting Mac number negative." हाँ गुड इवनिंग सर। वेरी गुड आफ्टरनून। यार तुम कैसे सॉल्व किए उसको, अपना सॉल्यूशन का स्टेप तो देखो। 1.4 माइनस 1/2, 1.4 माइनस 1/2, ये माइनस पॉइंट टू कब से आने लगा भाई? माइनस मतलब एक मिनट सर, मुझे समझ नहीं आया। 1.4 माइनस 2 ही तो रिलेशन होता है। अरे यार तुम्हारा ध्यान है। 1.4 माइनस 1 कितना होगा? 0.4, और उसको बाय 2 करोगे तो 0.2। तो तुम माइनस 0.2 क्यों लिखे हो? सर माइनस तो है ना। अरे हाँ सर, आ गया। क्या भाई? लेकिन सर मैंने पर उससे भी कर दिया सर, ये आइसेंट्रोपिक रिलेशन से भी किया है। आइसेंट्रोपिक से तो डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ, उसमें से जो T0/T की वैल्यू रख दी है 3.5 और गामा 1.4, उससे तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन तुम जो मैक नंबर निकाल रहे थे, वो मैक नंबर निकालने में इतनी बड़ी गलती कर दोगे तुम। थोड़ा जल्दीबाजी में हो गई। अरे भाई गेट 6-7 महीने चलो ठीक है, मजा आया। ठीक है। रिलेशन सर होता नहीं ये सर, उसमें किया ना, क्लास में किया ना। लेकिन मैं सोच रहा कि ये कैसे हो रहा है, वो माइनस दिख ही नहीं रहा, और दिख रहा है बट दिख नहीं रहा। अरे ढंग से तो माइनस लिख के रखे हो, बताओ तो। फर्स्ट क्लास माइनस सामने दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर, पर वो समझ नहीं आ रहा। अभी मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने मुझे, पर वो मैं कह रहा है माइनस में आ गया मैक नंबर। ये तो मैंने कुछ नया ट्राई कर दिया। तो यहाँ पे माइनस जैसे कभी-कभी होता है ना कि एक्स्ट्रा से कुछ लिख दिया जाता है और ध्यान वहाँ पे नहीं जाता है, तो वही वहाँ पे जो माइनस साइन एक्स्ट्रा लग गई है, उसकी वजह से तुम एक स्टेप आगे चले गए और उसके बाद फिर आगे दिक्कत होने लगी। लेकिन सर अब वैसे अगर इसे प्लस मतलब सही कर लेंगे तो आंसर तो इससे भी आ जाना चाहिए ना सर। आंसर तो कैसे भी करो। अब भाई जो डायरेक्ट आंसर टॉपिक तुमने लगा रहे हो, उसके ब्रैकेट में तुम लिखते हो T0/T, वो एक्चुअली क्या होता है? वो m का ही टर्म होता है। बस फर्क ये है कि इसमें m नहीं निकालना होगा। अब ऐसे जाओगे तो पहले m निकालो, फिर m निकालने के बाद वही फॉर्मूला लगाते हो जो फॉर्मूला डायरेक्ट आइसेंट्रोपिक में लगता है। इससे अच्छा डायरेक्ट आइसेंट्रोपिक लगाओ। तो जो ब्रैकेट में जो बाद में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना पेंसिल से, वो राइट अप्रोच है। हम भी बोले कि इसका मैक नंबर नेगेटिव आने लगा, ऐसे कैसे बोल रहा है सर मैक नंबर नेगेटिव आ रहा है? क्या बड़ी कर रहा है? अरे इतने एक्सपीरियंस होने के बाद तुम यहाँ से गलती करोगे, बताओ तो। चलो करो सॉल्व करो। ओके, वेलकम। So I saw his solution, and I want to say that these kind of mistakes students can do in GATE exam. So take this audio very positively, because you guys can do mistakes in your GATE exam. So let's talk about his mistake, what he has done. Actually, there was a ratio given in total pressure and static pressure. So he applied the Mach number concept, I mean compressible flow equation, and in hurry burry he did mistake, and you can see in the solution itself 1.4 minus 1/2, he has got the answer as minus 0.1. So this was the mistake he did in hurry burry. Actually what happens in GATE exam, we are actually working under pressure, all the solutions, because there is time lag. Every time you will feel that time lag, every time you will feel that you are out of time. So in GATE exam it is very important to focus on every single step. Make sure you should practice in such a way that you have to take that practice at that level. Whenever you are writing something, it should be correctly written, and create the habit that you should not be able to revise for second time. I mean, in one go itself you have to solve the numerical properly, so that you can save your time while revising. Like
Mostly what happens, students are solving the numerical and then they are revising the numerical. In that time you can read another numerical, right? So I want to say you to build up this kind of skill, that whenever you are solving the numerical, you should solve this numerical correctly in one go. In single attempt you should get the right answer. But because this is practice phase going on, so right now you can do mistakes, they are acceptable. In coming days you have to improve every single step, every single plus minus multiplication, everything you have to take care. Whatever you are doing you should do correctly. Okay, I mean, you should not be in stage that you have to revise the numerical to check whether your answer is correct or wrong. Mostly what happens in objective questions, when your answer is not matching, I mean, four options are there. When any option is not matching, then you have to revise your numerical where you have done mistake. Okay, so just to avoid all these things, you have to improve yourself. So how can you improve this? There are only two ways. First thing is practice as max as possible. Means hell lot of numericals you have to solve. If you are if you want to make, if you want to be error free person, like mostly what happens, you know the concepts, but you do mistakes in the solution. And next thing is, you have to revise as max as possible all the concepts and all the formulas, then you can be error free for sure. And one more thing, I hope you have enjoyed this audio. What I have changes the voice. Okay, I thought, okay, why to do something else, like, because it is kind of, it should be somewhat funny also. Because if we all are sitting in live class in classroom, like I used to run till 2019, like 2019, all used to come online class and we used to have amazing fun, man, seriously. So I thought, okay, let's do somewhat voice changer, and I hope you have enjoyed this. Thank you.